Good morning, all. Morning, sir. Good morning, sir. So first of all, we will go through the topics that we need to, or the pointers that we need to look for in a resume. Yeah, so that you can update accordingly. Yeah. So the first thing is that your skills should be pretty much clear when you mention it. Yeah. So mention something like this, like you may have some rating kind of thing. Yeah. Or you may have this kind of view that you can have wherein the skills are separated uh, from each other. It is in a moderate font. Yeah. So that it is easy to read. Yeah. Then you will mention the total years of experience. Yeah, so total years of experience. This is an old resume. So total years of experience plus what all you are capable of doing. That should be your highlight. Yeah. So the first section would be highlight, then is your skills. Yeah. And then comes the work history. In work history, you have to just mention what all you are doing in the day-to-day life. Yeah. So if you're mentioning Power BI as your past experience, right? So copy few of the pointers from here. Yeah. So you can say developed automated reports, strong experience in financial domain. Yeah. So this you are doing analyzing and estimating efforts or new features. Yeah. And uh, add some from here. Yeah. Like yeah. So they address Power BI queries, address team queries, yeah, and doing the Power BI development. That is also important here that you need to mention. So pointer from here, you can add it into your Power BI experience, yeah, and then your whatever actual experience would be that would follow. Okay, so you have to mention the work history after the skills. Skills is more important, yeah, and then just your basic details. Yeah. Rest is not at all required. Yeah. Like I hereby declare or something like that. And we previously used to mention objective, all of that. No need to mention that. Your basic details that are there. Your this one is not visible here. I don't know why. You should have the email ID, your contact details, and your LinkedIn profile added easily here. Let us open the Power BI report for my resume. Okay, that would be easier to view. Where is it? Yeah. So see here how we have mentioned the mobile number is there, the email ID is there, and the LinkedIn profile is there. Yeah, I have even added my image. Yeah. So first is your highlights, then the skills, right? And then is your experience like this. Okay. And then the basic details. Yeah. If you want, you can use this Power BI file to make the changes for yourself. Yeah. And you can create your own data. Yeah. If you want, I can give you this Power BI file. I'll just attach it here. Maybe it would be helpful for you. And this is the Excel data. Yeah. So the backend data is this, and the Power BI file is this. Okay. So make sure I'm giving this Power BI file to you and the Excel file. Make sure you remap it to this local file. Yeah. Store this into somewhere in your D drive and then open this file, go to data source settings and change it. Yeah. Change um, change it from the uh, data source or Power Query data, or you can create a new source as Excel and then you can replace it. Yeah, but that would be helpful for you to
generate an automated resume file. Okay. Now, coming to the interview rounds and the questions, yeah. So the first one would always be technical or face to face, yeah. So if it is technical, you will have to introduce yourself, yeah, first, and then you will be asked about your previous project that you have worked for Power BI. Yeah, if you are showing any other tools as your skill set, then you'll have to explain that as well. Yeah. So when they say introduce yourself, don't start from I stay here, I am like I studied in I class passed my 10th standard from this. Nothing, just keep it short. Yeah. You have to mention your degree, the latest education, then the total number of experience, and the company that you are currently working with. If you want to add, you can give a short description of your experience. Like first you started working for this company, then you move to this, then you move to this. Yeah, like this. So once the introduction is done, then you will have to explain the latest project. Yeah. So like what was the requirement, what was the data source, what was the size, what was the approach that was decided, how many members were there in the team. Yeah. All these kind of things be you should be able to explain in the first round. Yeah. Then the basic questions would appear, like they will just test whether you know Power BI or not. Yeah. So to know that, they will ask you basic questions like what is this visualization, or they may give you an example and ask you which visualization would be the best one for this. Yeah, they would ask you whether you know data transformations, that is a Power Query, and um, do you know tax calculations. So they will ask you to list few of them. Yeah. So that would be basic. Yeah. Most of the time nowadays what they do is they combine the F2F and the core technical. Yeah. So once you are done with this section, they quickly jump into these topics. Yeah. So it's not compulsory that they will ask you all of them in a sequence. It might be up and down. Yeah. Mostly on an average, it is based on these. Yeah. So they test your DAX calculation knowledge, they test your Power Query knowledge, and in Power BI service, they will ask you whether you are using Power BI service or report server. So based on that, they will ask you questions like what is an email subscription, what is an alerts, what is a dashboard, what kind of access can we give to the workspaces. Yeah, what solution did you apply to your reports. Yeah, all these kind of things. Okay. Yeah. Then third round would be a managerial round or ops round. Yeah, it is all again based on the project. Yeah, it is in depth for the project, right? How many teams, how many members are there in your team, what was your role in that team. Yeah. What challenges did you face. Yeah. So if there were any out of the box requirement, how did you handle that? Were you interacting with the client? Why do you need to switch the job? These kind of questions you will have to answer in ops round. Yeah. Additional things to mention, if they don't ask, you can tell that I have created data flows in Power BI service and then used it in the data sets. Yeah. I am aware of deployment pipelines. We create apps. Yeah. If you want paginated reports, if you are aware of SSRS, you can mention you can also handle Power BI paginated reports if given to explore. Yeah. You always stay updated with the latest release of Power BI desktop from Microsoft. Okay. These kind of things you have to mention. Okay. So this is about interview. Yeah. Then comes your LinkedIn profile. Yeah. So your LinkedIn profile should be also up to date. Same goes for Naukri profile as well. Yeah. So while updating the LinkedIn profile in your about section, mention in the same way that the technology name is. Yeah. So if you see power space and then uppercase BI, yeah, these kind of keywords will help the recruiter land onto your LinkedIn profile. Yeah. Because whenever you try to search for a profile or a candidate in LinkedIn,
If they are searching for Power BI, when they search for Power BI, your about would help you to uh, get what you say, get the notice quickly. Yeah, you can get noticed quickly in that particular uh, thing. Okay. Then you have the about section in which you have to describe what all how many years of experience you have and what all data tools you can handle or any other technologies that you can handle. Yeah. So you have to mention it like this. Yeah. So see here, it is also suggesting me to add some highlights. Yeah. Now, after that, your these things mention it precisely. Yeah. What all you do, what is your role, and the total years of experience. If you can take the LinkedIn skill assessment, yeah, for Power BI. Yeah. What will this do is it will help you to appear in the top 30% of the search related to Power BI. Okay. So try attending this assessment. Yeah. If you want, I can give you my URL so that you can connect with me and you can refer to the profile details how I update it. You can also add that as well. Yeah, this is my URL. So I've pasted the data, the backend data, update it for yourself, then prepare a Power BI report based on that Excel data. So you'll be able to prepare a resume from Power BI. Yeah, so you can do that. So this PBX, even if you don't refer it, you can create your own new Power BI file using this Excel data. Mention all the things that you need there, and you are very good to go. Okay. Yeah. Apart from that, if I can show you my this profile, I don't have the Naukri profile currently. Yeah. Okay. So if you see here, here as well, what is important? What is your CV headline? What all tools do you know? Yeah. So I've only mentioned what is required right now. Yeah. And then you can add your key skills. Yeah. And then the basic details. Okay. Yeah. So two sites, Naukri.com and Naukri.com and your LinkedIn profile. This would help you to get noticed by the recruiters. Yeah. So this is important. Yeah. Um, as I mentioned, this section and the about section. Yeah, these two sections are important and mention in the same way that the tool name is, as I said earlier. Yeah, so if it is Power BI, Power Space BI. Yeah, this helps you to this helps for the recruiters to quickly search and get landed to your profile. Okay. Yeah. Yes. Any questions? Anyone? सर पेज No नीडेड questions. रिपोर्ट के बारे में पूछना था। वो जो विजुअलाइजेशन का जो पैनल है ना उसमें ऐप पे हम्म वहाँ पे हम्म जो पेज नीडेड रिपोर्ट है ना उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। पेजिनेटेड रिपोर्ट जो है, SSRS अगर आप फेमिलियर हो तो पेजिनेटेड रिपोर्ट यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेजिनेटेड रिपोर्ट के लिए प्रीमियम लाइसेंस लगेगा, राइट? हाँ, मैं आपको टूल बता देता हूँ कैसा दिखता है। Power BI report builder. Okay, this is the app which can be used to build a report. Okay, now I will connect SQL Server here. Okay, so data sources. First of all, add data source. So I'll add SQL Server. I'll add that credit database. Okay. So I'll build this connection. I'll use the uh, server which is I have hosted here.
Okay, let's test the connection. This is fine. Let's hit OK. Now I need to add the data set. Yeah, so the data source and then adding the data set. This is important. Yeah, so I'll select the database. What I can do is either I write the query or I can write the stored procedure or anything. Yeah. Or what I can do is I can simply hit import the query that I have. Yeah. So this is the table. Let's say I need category. Yeah. Change set gives all. Yeah. Or these are the tables, right? So I'll just take charge, for example. Yeah. If I have some views, I can directly take the view. For example, let's take charge wide. Yeah. So I took this view, hit OK. It generated the query for me. I hit OK. The data set is ready. Now what I can do is I can insert a visualization. So let's say I need to insert a table. Okay. See here I inserted a table. Right click. How do we add is yeah. So first name, last name, provider name, so on. Yeah. Charge number. Okay. Now if I run this, I will be able to view the data here. Yeah. And so basically, same way as you work for SSRS, you will be able to create reports using paginated report, Power BI paginated report. When you try to publish it, it will ask you a premium workspace. Once you upload it there in the Power BI service, yeah, so it would be available like this, a tabular kind of a report. Yeah. Sometimes what happens is when we are creating a report, right, a Power BI report, we need to automate and export out of it, correct? But when we export it into PDF, what happens? The current view, like in this particular screen, we can only see the top 20 employees right now, right? But when you export it into PDF, what will happen? Only the snapshot will go, right? But what if the client needs or the end user needs the complete data in this particular visualization, the complete table? Yeah. They can manually export it, but what if they want to subscribe to this? That means they should receive an automated email for that particular table. Yeah. So the complete table cannot be exported or cannot be subscribed using a Power BI report. So that's why we use paginated reports. From the name itself, it suggests paginated reports. Let's say you have 2000 rows that needs to be subscribed. Yeah. So you need to send that 2000 rows as an Excel or a PDF or CSV file. Yeah. So if you need to send these kind of things, then you create a paginated report. Now you see here you have the data. Yeah. And it goes on loading. Yeah. So you can subscribe to this report. Yeah. So this is how the report would look like. You can design more, like you can add some title, you can format it. Yeah. Even you can add some basic visualizations, but not everything, right? Once you do this, you publish it. But to publish it, again, as I said, you will need a premium license. Yeah. So in short, what is paginated reports? If you want to create a tabular kind of a report which can be subscribed or which can be exported easily, not as a snapshot, but the actual data, then you use paginated report. Okay. Let's say I will call this as paginated test. Let's try to publish it. Yeah. You see why? Because it will say it needs a premium license. Here it won't say it, but this is what it is. It needs a Power BI premium license to publish it to the workspace. Okay. Yeah. Clear for paginated reports. This is how it would look like. Yeah. Now here, if you see, you can subscribe it. Yeah. So you can select the format of the um, mail that you need to send. In that, what file format you should attach, whether it should be PDF, Excel, anything. Yeah. So paginated report was again old version. Now Power BI has made things easy for you. Yeah. So instead of giving paginated report as a solution that needs a separate application to be installed in your system, what you can simply do is, if you just want the tables to be subscribed, what you can do is, like, let's say this is the data, right? You will not be able to create it on the report. So go to the data,
So this is the data, for example. I click on it and I say create formatted table. This is equivalent to paginated report. I agree that in paginated report, you can format the view, you can add the title or something like that you need. But if you just need the table, the normal tables, you can use create formatted table. Yeah, you see how you can add the table directly. For example, I'll say I have this employee data and I have these 3 columns. Yeah, I can simply add it. I'll go to the reading view. That means I will save this page report. It is also a kind of paginated report, and then I can schedule a subscription for this kind of export files. Yeah, clear? Clear, everyone? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay. All right then. So we think we have covered everything now. All right. Go ahead, try to practice the topics with the data samples that I have given. Yeah. Anytime you have any queries or doubts, just WhatsApp me. Yeah, ping me on WhatsApp, and I'll try to assist you with that. Okay. And before you're going for an interview, okay, let's say you land up or you schedule an interview next week, right? So ping me, give me the job description so that we can conduct a mock interview for you. Yeah. Why I'm telling you like to give me a week before or 2 or 3 days before the interview so that it stays fresh in your mind, the mock interview that we conduct. And based on the job description, we can decide, we will be able to see that what kind of questions might be there and what features they would be mostly interested in. Okay, sir. Sir, that resume Excel file I can't be able to download. You're not able to download it? No. सर कॉपी भी नहीं हो रहा है लिंक. Okay, I'll send it through email. No worries. Just give me a second. Yeah. So I'll reply to yesterday's email. And we'll attach it there. It is attached. Yeah, I've sent the email for the 2 files also. सर हमने क्या एक्सपीरियंस कितना दिखा सकते हैं इसमें पावर बीआई में? सपोज हमारा 5 years एक्सपीरियंस है, 2 साल तक कितना दिखा दिखाना दो. 1 से 2 साल? साल तक. हाँ. ओके ओके. और नहीं क्या करंट जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें ये सब बताने का, जो अपना जो पावर बीआई के जो किया है हमारे और प्रोजेक्ट में यूज कर रहे मोस्टली हैं. आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप पावर बीआई यूज कर रहे हो ऐसा दिखाना. और मैंने जैसा कल बोला कि कोई एक डेटा सेट आप डिसाइड करो आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसपे आप रिपोर्ट खुद से बनाओ. आप जब खुद से बनाओगे वो रिपोर्ट खुद से आपको पता चलेगा क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और वही चीज आप उनको एक्सप्लेन कर सकते ओके. इंटरव्यू. Any other questions, anyone? स्किल्स और उन्हें का वो जो अपना रिज्यूमे में है वही सीवी में वही यूज करने का ना, की स्किल्स जो मैंने डाले हैं वो मत यूज करो. आपके जो स्किल्स है पावर बीआई के अलावा वो ऐड करो और वो पावर बीआई ऐड करो. पावर बीआई स्किल्स में ऐड करना पावर नहीं. बाई. यस, पावर बाई. सर अगर पावर बीआई पे वर्क ही नहीं किया कभी, ये फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट किया, तो अभी कैसे रिज्यूम में क्या डालना है? वही मैं एक्सप्लेन किया ना कि आपका जो भी अभी डेटा आप कोई भी एक ले लो करंट ऑर्गेनाइजेशन से और हाँ. उस पे
पहले काम करो, ठीक है। पहले एक ट्राई डेमो रिपोर्ट बना दो खुद से, और फिर उसको आप रिज्यूम में डालोगे कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 1 या 2 साल आपको जो भी कंफर्टेबल है उतने साल से आप पावर बीआई में ही काम कर रहे हो, ऐसा दिखाना। प्लस जब एक्सप्लेन करने का टाइम आएगा इंटरव्यू में, तब आप ये जो आपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से जो डेटा लिया है, जिसपे आपने रिपोर्ट बनाने का ट्राई किया है, वो आप एक्सप्लेन करो। ओके, ठीक सर है। मोस्टली ने आपको कहे ओके हाँ बोलो। इंटरव्यूअर ने का मोस्टली रिपोर्ट पे ही जाएगा क्या, डैशबोर्ड पे? डैशबोर्ड का ही वो पूछेगा क्या ज्यादा? एक्चुअली वो ट्राई करेगा ये जानने की कि आपने रिपोर्ट्स बनाए हैं या नहीं। हम्म, तो अगर वो ट्रू करना है तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 रिपोर्ट्स तो बनाने पड़ेंगे। सो 3 डेमो प्रोजेक्ट्स पहले मेरे जो मैंने दिए हैं वो ट्राई करो, वो थोड़े इजी है। उसके हम्म, बाद आप करंट डेटा सेट, कोई भी एक डेटा सेट उठाओ करंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ। या हम्म, डेमो बनाना है हमको, एक्चुअल डेटा नहीं उठाना है ऑर्गेनाइजेशन का, हमें वैसा का वैसा ही डेटा सैंपल बनाना है, ठीक है। करेक्ट। डेटा प्रिवेसी का इशू ना आए, इसलिए हम वैसे का वैसा ही डेटा सैंपल बनाएंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे। सो आप जब एटलीस्ट 4 रिपोर्ट्स बना दोगे, सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि इस फीचर का क्या यूज है, इस फीचर का क्या यूज नहीं है, या लाइक दैट। सो विजुअल पे ज्यादा जाएगी नहीं ना, स्टार्टिंग का जो हमने बार चार्ट पे दिया वो उसका कुछ विजुअल्स यूज पे नहीं? नहीं, अगर उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है आपका विजुअलाइजेशन जानने के लिए तो जाएंगे, जैसे कि बुकमार्क क्या है, कस्टम टूल टिप क्या है, फिल्टर सिंक कैसा होता है, स्लाइसर सिंक जो है वो कैसे होते हैं, ड्रिल थ्रू क्या है, राइट, कौन सा विजुअलाइजेशन कब यूज करना चाहिए, these kind of things. लेकिन mostly they will ask you about data transformation, modeling, automation features, yeah, subscription, row level security, data gateway, ये चीजें important है। ओके, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सर टूल टिप में भी इंफॉर्मेशन दिखता है और ड्रिल थ्रू में भी इंफॉर्मेशन दिखता है, हम्म तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि टूल टिप ऐसा है और ड्रिल थ्रू ऐसा है? मतलब एग्जांपल देंगे तो ठीक है, समझ में आएगा, हाँ, लेकिन अगर एग्जाम्पल ही देना है ना। वन ड्रिल लाइन थ्रू में अगर इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन देना है तो? देखो, इंफॉर्मेशन तो पूरा रिपोर्ट में ही दिखेगा, नहीं तो फिर रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं, हाँ। करेक्ट। टूल टिप हम्म। क्या है? टूल टिप कुछ ऐसा चीज है, जब आप विजुअलाइजेशन पे हावर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन देता है। ड्रिल थ्रू क्या है? जब आप कोई पॉइंटर सिलेक्ट करके नेविगेट करते हो किसी अलग पेज में, तो ड्रिल थ्रू होता है। मेजर डिफरेंस है ना दोनों। हम हाँ। सिर्फ देता है टूल टिप और ड्रिल थ्रू। सो हम्म। हाँ, वो नहीं इनफ होगा, क्योंकि पावर बीआई तो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ही दे रहा है आपके डेटा का। हम्म। इट्स नॉर्मल टेबल टर्न्ड इनटू अ रिपोर्ट। हम्म। और डेटा मॉडलिंग में सर क्या क्या आएगा? डेटा मॉडलिंग में ये अपना डेक्स कैलकुलेशंस आते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी आता है, हम्म। क्रिएटिंग कैलकुलेटेड टेबल्स है, रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप प्रैक्टिस करो, उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, 3 टेबल्स में रिलेशनशिप हम कैसे नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, ये सारी चीजें देखो। कार्डिनैलिटी हमको बहुत फेमिलियर होना चाहिए, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या है ये फेमिलियर होना चाहिए, या दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सर तो कंपोजिट की भी क्रिएट करके भी हम 3 टेबल में रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते? नहीं, 3 टेबल में ट्रायंगल नहीं बना सकते हो आप रिलेशनशिप। यू कैन कनेक्ट वन, लाइक टेबल ए को टेबल बी से कनेक्ट कर सकते हो, टेबल ए को टेबल सी से कनेक्ट कर सकते हो। जब ये रिलेशनशिप होगा, सो टेबल बी टू टेबल सी एक्टिव रिलेशनशिप नहीं आएगा, ओनली इनएक्टिव रहेगा मोस्टली। हम्म। ठीक है। और और सर सर वो मोबाइल, मेरा हम बोलिए कैरी बोलिए। कैरी
सर अगर मोबाइल पे अगर रिपोर्ट शेयर करना है तो कैसे करेंगे? वहाँ पे मोबाइल में शेयर करना है तो मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो तो आप जो यूआरएल ले लो उस रिपोर्ट का जो पावर बीआई सर्विस में पब्लिश्ड हो, उस हाँ। रिपोर्ट का यूआरएल आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। और जब यूजर्स मोबाइल से उस चीज को एक्सेस करेंगे तो ईदर दे हैव टू एक्सेस इट ऑन अ ब्राउजर और दी पावर बीआई ऐप इंस्टॉल। ठीक है, कहीं पे भी आपको अगर रिपोर्ट एक्सेस करना है ब्राउजर्स पे, सो प्रायोरिटी इज दैट दे शुड लॉग इन विद द ऑफिस 365 आईडी प्लस दे शुड हैव प्रो लाइसेंस, प्रो और प्रीमियम। मतलब कोई भी ब्राउजर पे लिंक डाला तो एक्सेस कर सकते हैं रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो अभी हम देख रहे थे 2-4 दिनों से पावर बीआई सर्विस, वो एक्सेस कर सकते ब्राउजर्स। उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा ना? लॉगिन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप डेवलपर टूल है, मोबाइल में नहीं आएगा, विंडोज ही चाहिए उसके लिए। इवन iOS में, नॉट iOS, मैक में नहीं होता है पावर बीआई इंस्टॉल डायरेक्टली। आपको वहाँ भी एक तो वर्चुअल डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें विंडोज हो, या फिर सिम्युलेटर यूज करना पड़ेगा जिसमें विंडोज चले। ठीक है, सो मैक में पावर बीआई इंस्टॉलेशन अवेलेबल नहीं है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? सर ये विजुअलाइजेशन के लिए जो विजुअल्स यूज करेंगे हम डेटा सेट पे, ये तो हमें खुद डेटा स्टडी करके विजुअल्स अप्लाई करने हैं ना, या फिर रिक्वायरमेंट जब आते हैं तब उसमें मेंशन रहता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट मोस्टली आता है हाई लेवल का, राइट, कि हमें ये चीज इंपॉर्टेंट है देखना, हमें ये चीज का एनालिसिस करना है। ठीक है, सो दे विल गिव यू मेजर पॉइंटर्स कि इन चीजों का एनालिसिस करना है करके। सो उसमें फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी स्टडी द डेटा, देन वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट द डेटा टू द क्लाइंट, कि हमको समझे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में ये जो डेटा है ये क्यों दिया है, ये क्या डेटा है, ये क्या डिनोट करता है, राइट। ये जब चीजें आपके पास आ जाएंगी उसके बाद आप क्या करते हो, एक वायर फ्रेम बनाते हो। वायर फ्रेम मतलब पावर बीआई में ही बनाओ या फिर पीपीटी में बनाओ, कोई भी जगह पे आप बना के क्लाइंट के पास जाते हो कि आप बोलते हो कि ये चीज हम बना के देंगे। दैट इज व्हाट वायर फ्रेम इज। ऐसा होता है एक्चुअल लाइफ प्रोजेक्ट वर्किंग। या ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इज कि उनके एग्जिस्टिंग रिपोर्ट से किसी अदर टूल में उनको माइग्रेट करना है पावर बीआई में। उस चीज में बहुत इजी हो जाता है, आपको सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बनाना है पावर बीआई में। वहां पे चैलेंजेस ये आते हैं कि द वे दे कैलकुलेट थिंग्स और द वे दे इंपोर्ट द डेटा इनसाइड दैट रिपोर्ट टूल इज डिफरेंट इन पावर बीआई। पावर बीआई में माइग्रेट क्यों कर रहे हैं लोग? बिकॉज ऑफ इट्स रिच विजुअलाइजेशन एंड ऑटोमेशन टेक्निक्स, राइट। सो उसके लिए हमको डेटा सेट और जो कैलकुलेशन है वो हमारे पावर बीआई के तरीके से करना पड़ेगा, राइट। सो वो आता है चैलेंजेस। विजुअलाइजेशन माइग्रेशन के टाइम पे चैलेंज नहीं आता, माइग्रेशन फ्रॉम एनी अदर टूल। विजुअलाइजेशन चैलेंज है तभी जब ये लोग हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट देते हैं, या फिर वो लोग सजेस्ट नहीं करते कि स्पेसिफिक यही विजुअलाइजेशन चाहिए, राइट। तभी हमको हमारा विजुअलाइजेशन स्किल यूज करना है। रेस्ट ऑफ द टाइम राइट। यस संकेत, यू आर सेइंग समथिंग। तो ये यानी जैसे अभी आप हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ग्रेजुअली डेटा सेट पे वर्क करने पे ही पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस जो विजुअलाइज यानी जो भी चार्ट्स यूज करना है उसमें इनसाइट, जो मेनली डेटा में इनसाइट दिखाना है वो डेटा स्टडी करके और चार्ट्स। हाँ करेक्ट। हाँ, इसलिए जैसे मैंने बोला कि आप 3 to 4 रिपोर्ट्स खुद से बना लो। और ये ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जब आप यूज करोगे ना, यू आर इन अ प्लेस टू अंडरस्टैंड द डेटा वेरी वेल, राइट।
ओके। मुझसे भी ज्यादा आपको डेटा पता रहेगा वहां का क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप एक बेटर पोजीशन पे कब पहुंचते हो विजुअलाइजेशन करने के लिए, जब यू आर फेमिलियर विद द डेटा वेरी वेल। आपको पता है कि ये फील्ड का क्या पर्पस है, ये फील्ड का ये एनालिसिस अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा या फिर इस क्लाइंट को दूंगा तो उसको इसमें से क्या बेनिफिट हो। या वेनेवर मैं ये एक ट्रिक दूंगा आपको कि whenever you are doing a visualization, design it as if you will be consuming it, right? जैसे कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूँ, तो मुझे इस रिपोर्ट से मुझे क्या आउटपुट चाहिए। मुझे ये आउटपुट चाहिए कि मेरा सेल्स कहाँ पे कम हो रहा है, मैं उसे कैसे बढ़ा सकता हूँ, राइट? मेरा ह्यूमन रिसोर्स या फिर लेबर कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, मैं उसे कहाँ कैसे एफिशिएंट बना सकता हूँ, राइट? अगर मुझे मेरे मेरे जैसा सेम प्रोडक्ट कोई अदर ब्रांड भी बना रहे हैं तो उनके कंपटीशन में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। नाउ व्हेन आई आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, विजुअलाइजेशंस वुड अपीयर कि ठीक है, अगर ये इस काइंड का एनालिसिस दिखाना है तो मैं कौन सा विजुअलाइजेशन यूज करूँ, राइट? सो वहां से विजुअलाइजेशन आपका डेवलप होगा। या data manipulation means your data transformation, that is structuring the table, adding the calculation। ये सब अगर आपको बढ़ाना है तो कोई माइग्रेशन का एग्जांपल यूज करना। जैसे कि आपके एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक रिपोर्ट ऑलरेडी बिल्ड है किसी टूल में, go back to the data set from where it is connecting, try to replicate the same thing, try to design the same thing in Power BI। उससे आपका डेटा मैनिपुलेशन स्किल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके। गॉट इट। सर मेरा वो 38 है ना, 38 का नहीं क्या लॉगिन नहीं होता, 37 का हर बार होता है, लेकिन स्टार्ट बाय गेटिंग द ऐप बोल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, डाउनलोड नाउ 38 के लिए। 38 छोड़ दो, 38 में अकाउंट ही डिलीट करने वाला हूँ, सिर्फ 37 रखूंगा या फ्यूचर एक्चुअली के सर लिए। वो रिपोर्ट ये 37 से 38 देखने के लिए नहीं, कि लास्ट 3 सेशन अपने हुए, तो 38 में मैं चेक करने के लिए जा रहा था, क्योंकि उधर मैंने नहीं शेयर आप किया था। रिकॉर्डिंग्स के लिए भूल जाओ, रिकॉर्डिंग्स के लिए लॉगिन आईडी की जरूरत ही नहीं है, मैंने पूरा ओपन करके रखा है अपना रिकॉर्डिंग्स फोल्डर। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, जो नहीं कि हाँ हमने रिपोर्ट बनाए थे तो अपने को शेयर करना होता है ना, तो मैंने 38 पे लॉगिन करने के लिए ट्राई किया, क्योंकि 37 से 38 में मैंने रिपोर्ट शेयर किया था, जो हमने रिपोर्ट बनाए ना उस दिन, रिपोर्ट जो क्रिएट किए वो शेयर करते हैं ना यूजर से, हाँ नंबर ऑफ यूजर, तो ओपन हाँ। करने के लिए पावर बीआई पे जाके 38 को लॉगिन करना पड़ता है ना, 37 से 38 पे किया था, लेकिन 38 ही मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था। एक काम करो, वो जो रिपोर्ट है वो वापस ओपन करो, उस रिपोर्ट को ओपन करके 37 लॉगिन करो, 37 पे पब्लिश करो, 37 आईडी यूज करके पब्लिश करो। सेम ही इसमें पब्लिश किया तो भी चलेगा? हाँ नहीं सेम तो वर्क स्पेस में पब्लिश करो, लेकिन 37 यूजर आईडी यूज करो। मैं 38 आज में डिलीट करता हूँ, ठीक है? उसमें से जो भी कंटेंट है आपका निकाल दो उसमें से। ओके या ओके ओके हम्म। ठीक है। और जो गेटवे है ना, गेटवे के लिए आपका यूजर आईडी चाहिए या वो नहीं 37 भी आप चलेगा? आपके यूजर आईडी पे क्रिएट कर सकते हो ना गेटवे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको कोई यानी कि पे नहीं ना करना पड़ता? नहीं पे नहीं मेरे से ऑलरेडी लाइसेंस्ड है, आपको कुछ हम्म। करने की जरूरत नहीं है उसको। तो यूजर आईडी आप यूज कर सकते हो गेटवे ओके क्रिएट गेटवे करने के लिए। के ओके 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 थैंक यू। लिए। एनीथिंग एल्स? सर और नहीं कि सपोज एसएसआर उसका नहीं क्या पहले किया था मैंने, तो अभी तो मैंने ब्रशअप नहीं किया, तो वो भी डालेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट रहेगा उसका? बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप SSRS एक बार ब्रश अप करके डालते हो या फिर हाँ हाँ। SSIS भी डालते हो, हम्म। बहुत बेनिफिट होगा उसका। ओके 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 थैंक जितने ज्यादा आप BI रिलेटेड टूल्स डालोगे उतना ज्यादा आपके यू। चांसेस है हायर होने के। ओके ओके
थैंक यू। और वो एजूर का कुछ करने की जरूरत नहीं ना, डायरेक्टली बोलने का ना एजूर पे काम नहीं किया। हाँ, एज्योर पे अगर आपने काम नहीं किया तो नहीं नहीं पता। जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो वो नहीं करना। ओके। Anything else? Anyone? नथिंग फ्रॉम माय साइड सर। Okay. Okay. All right, then all the best for the future. Yeah. अगस्त के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर पाओगे बट पिंग कर पाओगे। या मेरा जो करंट इंडिया नंबर है वो भी इनएक्टिव रहेगा आफ्टर अगस्त। या सो जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। हम टीम्स मीटिंग कर लेंगे अगर जरूरत है या फिर गूगल मीट कर लेंगे। ओके ओके सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, वो वैकेंसी यानी रिक्रूटमेंट ड्राइव ज़्यादा कब स्टार्ट होगा, अगस्त में या कोई ऐसे पर्टिकुलर? पावर बीआई के लिए इट्स 24/7। पावर बीआई के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके ओके, कभी भी। हमेशा रिक्वायरमेंट आता ही रहता है पावर बीआई के लिए, सो नो नीड टू वरी। आप बस ओके। प्रिपेयर हो जाओ। प्रिपेयर होने के बाद आप प्रोफाइल अपडेट करना स्टार्ट कर दो लिंक्डइन और नौकरी पे। आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। या मेक श्योर थोड़े एफर्ट्स डालो आपके प्रोफाइल अच्छे से बनाने के लिए। या अगर आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर अगर कोई यूज करना है, कोई साइट्स नौकरी और लिंक्डइन बहुत अच्छे टूल्स है, उनके पैकेजेस भी अच्छे हैं रिज्यूम बनाने के लिए। वो भी अगर आप यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, दैट विल आल्सो हेल्प यू। ओके सर, आज का रिकॉर्डिंग सेशन है नहीं, रिकॉर्ड किया है ना? हाँ रिकॉर्ड है, ओके अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग्स ऑलवेज रहेंगे उसी लोकेशन पे